Food is a necessity. We all need to eat to stay alive and to function as individuals for a healthy society. But globally, about 1/3 of all food produced is lost or wasted along the management chain, contributing to greenhouse gas emissions and other environmental issues, wasting tremendous resources in the production processes and making recyclable materials in the waste stream harder to recover. Food production uses up to 35% of the planet's land and 69% of its clean water, while it also accounts for 24 to 30% of greenhouse emissions. जब हम खाना बनाते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं और उसको प्रॉपरली कंज्यूम नहीं करते और ज़्यादा एक्सेस बना लेते हैं और ये फिर सारे वेस्टेज में आती है और इवेंचुअली हम लोग पाकिस्तान के अंदर क्या करते हैं, उसको लैंडफिल में फेंक देते हैं। तो फूड लॉस और वेस्ट की वजह से तकरीबन 9% ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो लैंडफिल्स में खाना फेंकने की वजह से होती हैं। According to recent studies, food production is the #1 threat to the environment today and has led to the loss of 70% of biodiversity worldwide. The situation in Pakistan is not any better. Pakistan has a huge food chain system and hospitality industry, but currently no food waste management system exists. पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और उसकी तकरीबन 30 से 40% आबादी जो है वो ज़राअत के पेशे से मुंसलिक है और अफसोसनाक बात यह है कि तकरीबन 40% जो फूड पाकिस्तान में जो प्रोड्यूस होती है वो लॉस हो जाती है। इसमें यह है कि दुनिया के दूसरे ममालिक में तो फूड लॉस और वेस्ट के हवाले से बहुत काम हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इससे पहले इस हवाले से कोई काम नहीं हुआ और ना ही इसका कोई ऑथेंटिक डेटा हमारे पास मौजूद है। So there is a whole big vacuum in terms of organizations working on hunger and working on food wastage in Pakistan. There is no culture of food banking, there is no integration of technology, so nothing is being done around this whole affair, whereas 100 million Pakistanis are food insecure. हम समझते हैं कि हमारे यहाँ तो वाफर मिकदार में सब कमोडिटीज़ खाना, इस मुल्क में कोई भूखा नहीं सोता, वो ठीक है, बट आप ग्लोबल हंगर लेवल में आपका 94 आपका नंबर है, 117 ममालिक जिनसे डेटा लिया गया। तो ये तो बड़ी सीरियस कंडीशन है ना, इसको आप आंखें बंद करके ये तो नहीं कह सकते कि सब अच्छा है। ख़ास तौर पे कुछ ऐसे एरियाज़, सिंध का कुछ एरिया है, बलूचिस्तान का कुछ एरिया है कि जहाँ पे स्टंटेड ग्रोथ इज़ ए मेजर इशू। आपकी इन्फेंट मोर्टेलिटी या जो चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 1 एंड अंडर द एज ऑफ 5, इनकी जो मोर्टेलिटी है इसका एक मेजर रीज़न आपकी मेल न्यूट्रिशन है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट आप एक ज़राअत का मुल्क है और जहाँ पे आप इतना चीज़ें प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। At one end you see people begging at the roads, they are sleeping underneath the footpaths and the bridges, and on the other end आप देगों की देगें ज़ाया कर रहे हैं। WWF Pakistan, under its Sustainable Agriculture and Food Program, is presently working on its food waste and loss project in line with the Sustainable Development Goal of Zero Hunger and Responsible Consumption and Production. A pilot study on food loss and waste was done by WWF Pakistan, in which data was collected from 4 cities across the country. The WWF surveys revealed that 24.22% of cooked food is wasted in restaurants and 23.97% in hotels. Alarmingly, only 1% of hotels and restaurants reported having any waste management system which segregates waste. Major losses were found in the production and distribution of rice. Recent studies revealed post-harvest losses of over 20% and 1% loss during repackaging of rice from distribution to consumer. The survey also found 12.4% post-harvest losses in the tomato supply chain.
प्रोजेक्ट इसलिए शुरू किया था कि क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली इस प्रोग्राम को आगे लेके जाना चाह रहे थे और नेशनल स्केल के ऊपर हम लोग इसको एड्रेस करना चाह रहे थे इस चीज़ को कि हम लोग कितना अपने आप को मिनिमाइज़ कर सकते हैं फूड वेस्ट एंड लॉस को। इसका पर्पस ये था ताकि बाद में अगर कोई स्ट्रेटजीज़ कोई एक्शन प्लान्स बनाने हैं तो एटलीस्ट वी हैव द राइट बेसिक स्टडीज़ उसके ऊपर हों और वो हम लेके उसको आगे चलें। WWF has succeeded in bringing together diverse stakeholders from the vast food industry, including academia, industry, government and non-government sectors, to discuss the problem of food loss and waste in line with its sustainable development goals. WWF plans to partner not only with academic institutions but also farmers and corporations in the food service and hospitality industries to bring about change in this sector. Along with awareness campaign, WWF seeks to design and implement food waste and loss management systems in supermarkets, restaurants, hotels and households so that we can enhance the volume and availability of existing food. जब इंसान खुद अपनी प्लेट उठा के काउंटर के ऊपर लेके जाता है और वहाँ से खाना डालता है तो वो उतना ही खाना डालता है जितना कोई इस्तेमाल कर सकता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज जो है वो मिनिमाइज़ हो रही है। और जब बनाया ही उतना जाता है जितना स्टोर में से सेंट्रल स्टोर में से निकलता है तो तब भी आप उसको वेस्टेज को कम कर रहे हैं कि कितनी रिक्वायरमेंट है, आप उतना ही खाएं, उतना ही डालें और अगर जितना एक्स्ट्रा है वो तो इतनी दुनिया हमारे यहाँ जो है जिसको ज़रूरत है उनको देना चाहिए। तो बेसिकली हम इतना खाना ज़ाया करते हैं और जिस वक्त हम लेने जाते हैं उस वक्त लगता है हमने पता नहीं क्या कुछ खा लेना है, लेकिन जब हम खाने बैठते हैं तो पता चलता है कि रिक्वायरमेंट बॉडी की इतनी नहीं है जितनी हम करते हैं और इस वजह से हमारा बहुत ज़्यादा खाना वेस्ट होता है। ज़रूरत से ज़्यादा ऑर्डर करना और उसके बाद उससे फिर प्रॉपरली तरीके से मैनेज ना करना, मेरे ख्याल में ये वेस्टेज ऑफ फूड नहीं है, ये एक क्राइम है। अगर इफ़ यू मैनेज इट प्रॉपरली तो आपका जितना फूड वेस्ट होता है वो वेस्ट होने के बजाय लोगों को जाए, गरीब बस्तियों में जाए। इसलिए करते हैं कि हमें एहसास नहीं है उन लोगों का जिन बेचारों को एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो। इसमें लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, लोगों को कल्टिवेट करने की ज़रूरत है, एहसास दिलाने की ज़रूरत है। यंगस्टर्स ने, बच्चों ने ये शुरू किया हुआ है कि शादियों पे जो बच जाता है वो होटलों में जो खाना बच जाता है बजाय वो फेंकने के वो कलेक्ट कर लेते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। What we tend to see is we have got a risk shop, which is a service that picks up excess food from different parts of the food supply chain. We have partnered with restaurants, caterers, bakeries, farms and households even, and our rickshaw goes around the city and picks up food from all these different partners and it brings the food at our food bank. The food is checked there for the quality checks and then the food is sorted, repackaged and then it's handed out to the people who are registered with our food banks. And those are the families that are, you know, ultra poor families and they tend to eat one of the best available food out there in the market. एक जगह पे जहाँ खाना ज़ाया हो रहा होता है, we channelize that food ताकि खाना ज़ाया ना हो. On the other end, जो लोग भूखे हैं, जो लोग मुस्तहिक हैं, हम लोग उनको ढूंढ के खाना पहुँचा रहे होते हैं. जैसा कि हमने देखा कि मुख्तलिफ अदारे पाकिस्तान के अंदर भी खाने की वेस्टेज को कम करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं. अगर हम इसी चीज़ को बढ़ाकर पॉलिसी लेवल पर ला के इसको इम्प्लीमेंट करवाएं तो हर घर में, हर अदारे में इस चीज़ को लाकर हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं. और जो कि हमारा स्लोगन भी है कि वी से नो टू फूड वेस्टेज. The problems are clear. We all need to eat, but the way we produce and consume food is putting an impossible strain on the planet. With the Food Loss and Waste Management Project, WWF Pakistan aims to make the population more food secure than it is now.